Assalamu alaikum, this is Chaudhry Mohammad Osama, and today we are going to discuss the type of lines in an engineering drawing and graphics. Basically, the type of lines are really important in order to understand the engineering drawing. If you need to understand every aspect of a drawing, this is very important that you understand what each line represent and what are the properties and the characteristic of each line. So basically, we will start with the line conventions. In a technical drawing, each type of line has its own significance. Each is distinguished from the other by a particular thickness or a shape. Basically, in a technical drawing, there are many type of lines. These are the five main lines that we are going to discuss today. इसके अलावा और भी काफ़ी lines होती हैं, but these are the five main types जिनसे that you will probably find in every single technical drawing. So each line has its own significance, its own use, and its own purpose, and they are basically different from each other in their particular thickness or shape. So the first one we have is center lines. The convention of a center line is that it's basically a long dash. It's basically a long dash, a small dash, and then a long dash, then a small dash, and a long dash. So it's not a continuous line. Continuous line नहीं होने का मतलब है that it's breakable. There are breaks here, breaks here. It's not a continuous line. So the lines made up of long and short dashes, alternately spaced and consistent in length, used to indicate the symmetry about an axis and a location of center. So basically, it's used to indicate the symmetry about an axis and to indicate the locations of centers. So basically, the important thing about the center line is that it always starts and ends with a long dash, and it's not a continuous line. And basically, the long dashes are usually 6 millimeter, and the small dashes are around 1 millimeter. And the spaces between the long dash and the small dash are also around 1 millimeter. These are the standard measurements that are used for the central lines. But if you, in order to change that, you can also use other dimensions, but you have to make sure that all your long dashes are equal to each other, and all your small dashes are equal, and the spaces between the long dashes and small dashes are equal throughout the center line. So one more important thing about the center line is that they always intersect on short dashes. Like for example, if you're drawing a center, if you're locating a center of a circle, and you need to draw the center line of this circle, so you need to draw two center lines. So the point of intersection of these two center lines will always be a small dash. So this is something really important, that you cannot use a long dash in the center at the point of intersection, and you have to always remember that the long dashes will be the last dashes. सही तो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो आपकी जो सेंटर लाइन है वो स्टार्ट भी लॉन्ग डैश से हो रही हो और एंड भी लॉन्ग डैश से हो रही हो, लेकिन जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इफ देयर आर टू सेंटर लाइंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट शुड बी स्मॉल डैश. The next line is visible lines. Visible is the heavy unbroken lines. Unbroken, like इसमें कोई space नहीं है. Unlike the central lines where we were finding these spaces, visible line is a continuous line or a heavy unbroken line used to indicate the visible edges of an object. Like for example, this is an object. Let's say this is the top view of an object and this is the front view of an object. So basically, the outline or the basic outline or the circumference of an object is basically indicated by the visible lines, and these are the continuous thick lines, and these are basically showing the outline of the object. Then we have the hidden lines, medium lines with short evenly spaced dashes used to indicate the concealed edges. Medium lines is basically showing the thickness of the line, that it is not very thick line, it is not even very thin line, it is a medium thickness line, and it is made up of short evenly spaced dashes. Like for example, this is a hidden line. It has small equally spaced dashes. Okay, you have a lot of dashes and they are equally spaced and they are small. Unlike the header lines, there is no large dash. इसमें जितनी भी dashes use होती हैं, these are all small. And in a hidden line, basically जो आपकी dashes होती हैं, this is around 3 millimeter by standard, and the space between the dashes is around 1.5 millimeter. So this is the hidden line. It is basically used to indicate the concealed
एजेस लाइक कंसील्ड एजेस लाइक जो किसी व्यू में अगर आपको कोई शो नहीं हो रहा एज और कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्ट शो नहीं हो रहा, सो बेसिकली if you need to show that part that is not particularly visible in that view, so you use the hidden lines. Like for example यहाँ पे एक example दी हुई है, so these are the two edges that are not shown in this view. So उसने ये दोनों edges जो हैं ये hidden line से show किए हुए हैं. Then we have the extension line. This is basically thin unbroken lines used to indicate the extent of dimensions. Thin unbroken lines is basically the thickness is less than the hidden lines, and unbroken line is basically the same as the visible line. Like इसमें कोई space नहीं है, and it is used to indicate the extent of dimensions. Extent of dimensions का मतलब है कि वो बता रहा है आपको, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप किस पार्ट की डायमेंशन ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो दो लाइंस हुई हुई है ड्रॉ, दीज आर द टू एक्सटेंशन लाइंस, और उसके दरमियान में जो लाइन ड्रॉ हुई है, दिस इज अ डायमेंशन लाइन. सही है, एंड दीज टू लाइंस आर बेसिकली द एक्सटेंशन लाइंस. सो ये बेसिकली एक्सटेंशन लाइंस जो होती हैं, दे आर एक्सप्रेसिंग द एक्सटेंट ऑफ डायमेंशन, दे आर यूज्ड with the dimension lines. And then we have the dimension lines, and last, thin lines terminated with arrows headed at each end used to indicate the distance measured. Basically these are the thin lines again, and they have arrows at each end, and it is used to indicate the distance measured. So basically the dimension lines and extension lines are both used for the dimensioning of an object. We will see that in detail in the next slides. So with the object line, basically this is the object line. This is a diagram of this is orthographic projection of an object. As you can see in this projection, the blue lines are all these object lines. There is a thick continuous line. The object line or the visible outline is made up of a continuous line that portrays the visible forms of the object. It is a thick line. Its thickness is chosen to clearly show the shape. So basically ये जो lines होती हैं ये outline show कर रही होती है आपके object की. आपने जितनी भी आपके जो भी आप projection draw कर रहे हो उसमें जो भी visible edges हैं, you always draw that with a thick pencil, and that basically thickness shows that the edges are shown or visible in the given view, and those lines are basically known as the object lines. So these the basic thickness varies around 0.5 millimeter thick, and this is basically drawn using our darker pencil. Then we have the hidden line. Hidden line is basically the lines that are used to represent any object or edges that are not shown in a particular projection. Like for example, this is also a orthographic projection of a drawing. So these are two hidden lines. This is basically a hidden line of an of a hole, basically a counter bored hole. So I've also taught you what a counter boring is. So this is the these are the two hidden lines of a counter bored hole. The hidden line feature is made up of dashed line that portrays the surfaces and the edges that are hidden from the view. अब ये जो दो व्यूज हैं, ये आप टॉप व्यू में देख सकते हैं कि ये दो होल्स हैं, बट दिस इज फ्रंट व्यू, एंड यू कैन क्लियरली सी के फ्रंट व्यू में आपको ये दो होल्स जो है ये विजिबल नहीं थे, बट यू हैव टू शो देम बिकॉज दे एग्जिस्ट. So the way to show them is to draw them by a hidden line, and hidden line उसने कैसे ड्रॉ की हुई है, स्मॉल डैशेस में. ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि जितने भी डैशेस हैं इन सब का जो डिस्टेंस है या इन सब की जो मेजरमेंट है दैट इज सेम, और इन सब के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो सेम, एंड इट इज नॉट वेरी थिक और नॉट वेरी थिन लाइन, इट इज द मीडियम थिकनेस लाइन. Then we have the center line. Center line is basically used to show the center of an object or to show the symmetry. Like for example, आपके पास ये top view है, उसमें आपके पास ये दो holes हैं. So you are basically showing the center of these holes. So what you are doing is basically ये आपका होल है. अगर मैं इसको enlarged version में दिखा दूँ तो ये अगर आपका होल है तो आपने क्या किया है कि एक सेंटर लाइन ये ड्रॉ की है. अभी सेंटर लाइन में आपने क्या किया कि एक लॉन्ग डैश से स्टार्ट किया है, एक स्मॉल डैश एंड देन अ लॉन्ग डैश, और एक सेंटर लाइन आपने अब ये वर्टिकल बना दी, और अब आप एक सेंटर लाइन ड्रॉ करोगे दैट इज हॉरिजॉन्टल. अब इन अ हॉरिजॉन्टल वे यू विल आल्सो ड्रॉ लॉन्ग डैश, अ स्मॉल डैश, अ लॉन्ग डैश, अ स्मॉल डैश एंड देन अ लॉन्ग डैश. सो व्हाट इंपॉर्टेंट इज कि जो आपका सेंटर पॉइंट है जहाँ पे दो सेंटर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट शुड बी यूज्ड विद द स्मॉल डैशेस, और आपका जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है दैट इज द लॉन्ग डैशेस.
So this is how you draw a center line of a circle. However, if you need to show the symmetry, basically this is showing the symmetry of an circle, तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर सिर्फ एक vertical draw करोगे center line, and इसमें भी वही rule follow हो रहा है. It starts with a long dash, then there is a small dash, and then there is a long dash. अच्छा, you don't have to extend it all over the uh, object. जिस चीज़ के आप सिमेट्री शो कर रहे हो, if that object is covered, तो you don't need to extend it, and you have to make sure कि अगर for example आपका center point center small dash है, तो आपकी जो long dashes दोनों तरफ है that should be equal. इस तरह ना हो कि एक तरफ से आपकी जो center line है that is so long and the other side is just containing one single long dash. That is also considered as a wrong center line. So basically, center lines are used to indicate the symmetry of the center of the objects, and there is two things that you need to remember, that it always starts and ends with a long dash, and the point of intersection of the center line is always small dashes. Now these are the dimension lines. The dimension line is a fine line ending with an arrow. The purpose is to enter and specify the placement of dimensions. So basically dimension lines जो होती हैं उसमें ये होती है, they are always a fine line that is ending with an arrow. This is a dimension line. These are all the dimension lines and they are all starting and ending with an arrow. But इसमें मसला ये है कि these dimension lines cannot specify कि आप किस चीज़ की dimension दे रहे हो unless there is an extension line with it. Like for example, ये सारी dimension line given है, but you don't exactly know कि ये किस चीज़ को represent कर रही है. But when you add an extension line with it, you will understand कि ये dimension lines जो है ये किस चीज़ को represent कर रही है. So basically, a dimension line is a fine line ending with an arrow. The purpose is to enter and specify the placement of dimensions. वो सिर्फ इस चीज़ को बता रहा होता है कि जो आपकी dimensions है वो कहाँ पे place हो रही हैं, और ये जो dimension given है ये किस extent से किस extent तक है. Now you add the extension line. अब आपने जब भी dimensions देनी है ना, it's really important that you add the combination of an extension line and the dimension line. अब क्या हो गया कि पहले आप अगर notice करें, so this were only the dimension line, now you have added the extension line as well. अब extension lines कौन सी हैं? Extension line, these are extension lines. All of these are extension lines, and जो उसके अंदर arrows draw हुए हैं, these are all dimension lines. So basically the combination of an extension and dimension lines is used for dimensioning. So use the combination of these both lines for the dimensioning purpose. अब आप इसको देखेंगे तो you will understand कि जो dimensions दी हुई हैं ये किस part की दी हुई है. For example, ये आपके पास एक extension line है और ये आपके पास एक extension line है, and then you have a dimension line in between. तो अब इस dimension line और इस extension line से पता चल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो distance है that is 45. सही है. So extension line are the fine lines that indicate the placement of the dimensions. इसी तरह यहाँ से भी ये extension line और ये extension line, and then you have the dimension line. तो जब इन दोनों को आपने combine कर दिया और उसके ऊपर ये numeric letter दे दिया that is 20, so you figure out कि अच्छा ये जो dimension दी हुई है ये किस part की है. So that is really important to understand कि आपने extension lines और dimension lines दोनों का क्या purpose होता है और दोनों किस तरह use होती हैं. Now we have a leader. Basically, a leader is used to indicate the part of a drawing to which the node refers. So we have two things, the leader and the node. So basically, this arrowhead is basically a leader. जो मैंने highlight किया, this is a leader, and this is 95% of the time this is used to indicate the radius or the diameter of a circle. So what leader does is that it gives out the information of the node. मैं explain करता हूँ थोड़ा सा. Like for example, this is a circle. सही है, हम इसमें सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं. अब हमने ड्रॉ करना है इसका लीडर. सो बेसिकली व्हाट लीडर डज इज के लीडर, दिस इज लीडर. अब लीडर क्या बता रहा है? लीडर इसके अंदर यहाँ पे एरो शो कर रहा है और यहाँ पे ये एक इस तरह की शोल्डर शो कर रहा है जिसके ऊपर आप नोट लिखोगे. अब नोट के अंदर आप इन्फॉर्मेशन दोगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी मल्टीप्लाई बाई 2 जो यहाँ पे गिवन है. ठीक है. सो बेसिकली अब आपको क्या शो हो रहा है? लीडर ये बता रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, दिस इज कॉल्ड एज नोट. This is called as note. The information that is given upon the leader is called as note. और ये जो note है that is combined with this leader and this gives out the information about the circles. अब आपके पास दो circle हैं. These two circles. अब आपने एक leader लगा दिया with an arrowhead and the shoulder,
और उसके ऊपर आपने एक नोट प्लेस कर दिया. सो अब इन लीडर और नोट से आपको इंफॉर्मेशन मिल गई अबाउट दीज टू सर्कल्स. So this is basically the purpose of a leader. So you use the leader and the node to give out the information, and these are basically used to give the dimensioning to the circular objects. Now we have a cutting plane line. Cutting plane line is basically showing the cutting plane line is very thick, and line is used to designate where an imaginary cut took place. So basically cutting plane line is basically showing कि आपका एक imaginary प्लेन है, उसने वहाँ पे एक कटिंग परफॉर्म की है, और उस कटिंग परफॉर्म करने के बाद जो आपका पार्ट है दैट इज बेसिकली सेक्शन. तो कटिंग प्लेन लाइन इज नॉट लाइक दिस, जो जिस तरह यहाँ पे शो हो रही है. कटिंग प्लेन लाइन इज अ लिटिल डिफरेंट देन दिस. इट इज बेसिकली starts and ends with a long dash like a central line, and जो उसके लास्ट दो डैशेस होते हैं दिस आर थिक, बेसिकली थिक, मोर थिक देन दी अदर वंस, और यहाँ पे इसके यूँ एरोस हो रहे होते हैं. दिस शोज द प्लेसमेंट ऑफ अ cutting plane. So these are basically just like the central line, लेकिन इसके जो लास्ट दो edges होते हैं which are long dashes, उनको वो उनकी thickness बाकियों से ज़्यादा होती है. And this is basically just showing कि कहाँ पे आपका imaginary plane है जिसने आपकी sectioning perform करनी है या cutting perform करनी है, वो टेक प्लेस कर रहा है. सो इसकी एक एग्जांपल है which I will tell you when once we discuss the section lines as well. So basically these are the section lines. यहाँ पे आपका कटिंग प्लेन है, वो आपको ये शो कर रहा है कि यहाँ से आपका प्लेन, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट कट हुआ है, तो these are the section lines. The section lines are the fine lines used to indicate the surface imagined to have been cut. अब this is the surface that is imagined to have cut, or this is the surface where we introduce the cutting plane. So the lines that, or the parts of an object that a cutting plane touches is basically shown by the section lines. अब ये जो लाइंस शो करी हैं वो ये शो करी हैं कि जहाँ पे जो कटिंग हुई है वो it took place. So we have an other example that will help you understand this much better. For example, this is an object. Let's say this is an object and this is the observer. This is looking at the object. अब आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि ये जो ऑब्जर्वर है दैट इज लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट एट दिस साइड. ठीक है, आपके उसकी जो फ्रंट व्यू है दैट इज द येलो एरिया दैट इज हाईलाइटेड. ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल. अब इसमें हम एक कटिंग प्लेन इंट्रोड्यूस करते हैं. दिस इज द इमेजिनरी कटिंग प्लेन. ठीक है, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ. दिस इज द ऑब्जेक्ट और उसके अंदर हमने ये कटिंग प्लेन इंट्रोड्यूस किया. द ब्लैक प्लेन इज बेसिकली एन इमेजिनरी कटिंग प्लेन. अब इमेजिनरी कटिंग प्लेन इंट्रोड्यूस हुआ है एट द सेंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इसके बिल्कुल सेंटर में एक इमेजिनरी कटिंग प्लेन इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड आफ्टर दैट ये जो प्लेन, अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, ये बीच से कट हो गया. अब हुआ क्या है कि जो अब यहाँ पे अगर आप टॉप व्यू बनाएंगे तो आपने जो अपनी शो करनी होगी कटिंग प्लेन, वो आप इस रेड एरिया के ऊपर शो करोगे. ठीक है, क्योंकि आपका अगर टॉप व्यू देखोगे तो आपका इमेजिनरी प्लेन जो है वो यहाँ से है, तो आपका जो कटिंग प्लेन लाइन होगी वो आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे. हाउएवर जब आपने कटिंग प्लेन इंट्रोड्यूस किया तो अब आप इमेजिन करो कि कटिंग प्लेन उस ऑब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स को टच कर रहा है. ठीक है, अब उसने ये सारी सरफेस टच की एक्सेप्ट द इनसाइड ऑफ दीज सर्कल्स. तो जहां जहां पे ये आपका कटिंग प्लेन उस पार्ट्स को टच कर रहा है, कट कर रहा है, वहां वहां पे आपकी सेक्शन लाइन ड्रॉ होगी लाइक दिस. ठीक है, अब ये आपके पास दो पार्ट्स जब डिवाइड हो जाते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट कट जाता है तो आपके पास ये दो पार्ट्स बन जाएंगे. और ये जो येलो लाइंस हैं, ये येलो लाइंस जो थी ये कटिंग प्लेन के साथ इंटरेक्ट हुई थी. सो ऑल दीज येलो सरफेस इज बेसिकली नॉट शोन विद द सेक्शन लाइंस, कि आपका कटिंग प्लेन यहाँ पे टच हुआ था व्हेन द कटिंग टुक प्लेस. सो दिस इज हाउ यू show the section lines. So basically this is an view जिसमें आपकी sectioning show हो रही है. sectioning का मतलब होता है कि आपकी cutting show हो रही है, आपने एक object को cut किया और उसके बाद cutting show हो रही है. अच्छा, there is one important thing कि हम ये sectioning perform क्यों करते हैं, हम ये cutting perform क्यों करते हैं. ये भी important है. ये इसलिए important है कि काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आपने कुछ features जो होते हैं ना वो visible नहीं होते हैं किसी व्यू में, किसी भी व्यू में. तो वो आप क्या करते हो, वो आप उसको सेक्शन करते हो, सेक्शन करके वो जो फीचर्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, और उसकी वजह से आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी क्या प्रॉपर डायमेंशंस हैं या वो किस तरह की उनकी शेप है. सो बेसिकली इसलिए हम सेक्शनिंग परफॉर्म करते हैं. Now we have a short break line. Short break line is used very rare, but it's also important. अगर short break line is a thick irregular line used to indicate a partial cut. The line is draw freehand. अभी जो line draw होती है that is freehand drawing. इसकी कोई particular
डायमेंशनिंग नहीं है या कोई तरीका नहीं है इसको ड्रॉ करने का। दिस इज़ अ फ्री हैंड ड्राइंग एंड दिस इज़ यूज टू इंडिकेट अ पार्शियल कट, या वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो इतना सा पार्ट है आपके ऑब्जेक्ट का ये कट हुआ है। एनीवे अब इसमें नोटिस करने वाली ये बात है कि यहाँ पे तो ये शॉर्ट ब्रेक लाइन आई हुई है जो फ्री हैंड है, लेकिन जो पार्ट आपका कट हुआ है उसके अंदर सेक्शन लाइंस भी आई हुई है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट जहाँ पे भी आपकी कटिंग तो कटिंग प्लेस होगी वहाँ पे आपकी सेक्शन लाइंस देयर विल ऑलवेज बी सेक्शन लाइंस। Then we have a long break line. The long break line is a fine line used to shorten the view of a long part that can be shown that cannot be shown full length. Basically, a long break line is two zigzag lines. जिस तरह आपको ये शो हो रही है, तो वो क्या कर रही होती है कि वो आपको किसी व्यू में अगर कोई पार्ट बहुत इलोंगेट हुआ है या उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसको शॉर्ट करके दिखाने के लिए आप लॉन्ग ब्रेक लाइन यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल ली हुई ऑफ योर टी स्केल। अगर आपने टी स्केल, क्योंकि टी स्केल की आपकी यहाँ से यहाँ तक कोई भी जो शेप है वो चेंज नहीं हो रही, इट्स जस्ट एन एलोंगेशन। सो आप क्या करोगे, आप उस टी स्केल के ऊपर दो लॉन्ग ब्रेक लाइंस लगा दोगे एंड जब रीडर विल नो कि यहाँ से इसकी जो डायमेंशनिंग है, डायमेंशन आप उसको ओरिजिनली दे दोगे। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 200 मिलीमीटर, तो आप जो यहाँ पे डायमेंशंस दोगे वो भी 200 मिलीमीटर की दोगे। आप जो यहाँ पे डायमेंशंस दोगे वो भी 200 मिलीमीटर की दोगे, बट जो रीडर होगा उसको आइडिया हो जाएगा दैट यू हैव यूज्ड द लॉन्ग ब्रेक लाइंस, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे इसने शॉर्ट करके इसका व्यू बनाया। सो बेसिकली दीज आर द समरी। हमारे पास दिस इज अ विजिबल लाइन, ठीक है, इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट लाइन और अ विजिबल लाइन, वो आपको बता रहे हैं कि लाइन कैसी होती है, उसका नाम क्या है, इस तरह की लाइन ड्रॉ होती है, दैट इज़ अ विजिबल लाइन। पोर्ट्रेज द विजिबल फॉर्म, और इसकी थिकनेस जो है दैट इज़ 100%। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। स्मॉल डैश लाइंस आ गई, दीज आर द हिडन फीचर लाइन। Portrays the surfaces and edges that are hidden from a view. Basically, अगर आपकी कोई projection है and there are some edges that are hidden from that projection, then we use the hidden feature line. The thickness reduces from the 100% to the 50%, and the thickness is medium. Then we have the central line. We have small dashes, long dashes. Then there is a small dash. There is a long dash. Then there is a central line. It portrays the center of a round of a circular object. इसका एक और function भी है that it shows the symmetry of an object. The thickness is very low, the thickness is fine, and it's reduced to 25%. Then we have the extension line, the lines that are in purple color, these are the extension lines, and it is used to indicate the dimension. Thickness is fine, the same thickness that we use for the center line. Then there is a dimension line, and basically it's the same purpose that extension line and the dimension lines both are used to indicate the dimensions. And then there is a cutting plane line, like I already told you कि आपकी जो cutting plane line होती है वो भी long dash and small dash के combination से होती है, but the last two dashes are more thick than the other ones and it indicates the placement of an imaginary cut, and इसकी जो thickness होती है that is pretty thick. Then we have the section lines indicate the surface imagined to have been cut. जहाँ जहाँ पे आपका कटिंग प्लेन टच कर रहा होता है आपकी surfaces को, वहाँ वहाँ पे आप section lines place करते हो. The thickness is fine. And then we have the break lines, the short break lines, the long break lines basically used to shorten the view of a part. And then we have the leader line that is basically giving the information which is given in the node, and the thickness of this leader is also fine. Now we have the line conventions, and this is an example. यहाँ पे आपके almost हर तरह की line given है, तो this is basically a kind of an home assignment that you have to look all these lines, और यहाँ पे ये indicate हुआ है कि which lines are extension lines, which are lines are dimension lines, the central line and the hidden lines and the break lines. So you have to understand कि ये this is a proper engineering drawing, so you have to understand कि एक drawing में कौन सी lines कैसे use हो रही होती हैं. So this is it about the type of lines for engineering drawing. Thank you.